So, Assalamu alaikum. We are starting our class of geography. Okay. In our last class, we are going to have a recap in what we studied last time. Okay. Now, listen very carefully to what I'm about to tell you now. Is that every day at the end of my lecture, I'm going to assign 2 to 3 people who are going to give me the recap of what we studied. Okay. Like for example, for tomorrow's class, I'm picking um, okay, fine. I'm picking Rahim, I'm picking Danish, and I'm picking Raja. Okay, you three are assigned to give me a recap of whatever we are studying today. Okay, when we are going to start our next class, I will start by asking you three of what we studied. Okay, this is what we are going to do every time. Like for example, then we are going to have a block of history. So I'm going to assign 3 or 4 people again. Okay, this is how we are going to have a recap every time. This is going to be convenient, and at the like this, you will all have a chance to tell me if you have any problem. Okay. For now, you all know that I always allow you to ask me questions. Okay, and I don't think you are having any problem so far. Okay. Okay, I think Rafi has a question. Yes, Rafi. Wait. Yes, Rafi. Can you speak? Okay, wait. Okay, Rafi. मिस जो भी आपकी अब अभी क्लास होगी, अब जब आपकी कोई अगली क्लास होगी आप उसके लिए पहले से ही 3 बच्चे चूज कर लेंगी. Exactly. बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं बाकी बच्चों से नहीं पूछूंगी. ओके, आप लोगों को पता है कि मुझे क्वेश्चंस करना कितना पसंद है. सही है, ये तब तक आप लोगों को पता चली गई होगी मुझसे 1 साल पढ़ने के बाद बात. सही है, जरूरी नहीं है कि मैं उन 3 से ही पूछूं. मैं क्वेश्चंस तो किसी से भी कर सकती हूँ, लेकिन उन 3 से मैं रिकैप जरूर लूंगी, तो दे शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड. सही है, तो अब हम यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. ये सभी. हाँ, Teacher, are you taking test? no, I never assigned a test. Okay. Now, one more thing, if you have any questions, you can raise your hand in Zoom. Okay, you all know how to raise your hands. Okay, you can see there's a chat column. So yeah, besides the chat column, you will see 3 small dots. Okay, when you will click it, you will have many options, and one is going to be to raise your hand. Okay, if you have any question, you can raise your hand, and I automatically ask you to if you have any problems. Okay, now we're going to start with our lecture today. That is, we talked about some different kinds of uh, forts, some different kind of watchtower in our last class. So let's have okay. Let's have Abiha. Did you take your did you take the last class? No, miss. Oh, yes, miss. Yes. Of geography? Yes, of geography. No. Okay, then we're going to have Sanan give me a quick recap of what we talked about in the last class. Teacher, we talk about Alfred Fort, the watchtower. Okay, we talked about Alted Fort, which is known as a watchtower. Okay, what is the work of a watchtower? Yes, Ansal. What is the work of a watchtower? मिस मिस पिछली क्लास में ना मेरे घर पे लाइट की थी, इसके लिए मैं ना क्लास में नहीं आया था. Ansal, I'm saying कोई मसला नहीं है अगर आपने नाच क्लास नहीं ली थी, but can you tell me have you heard about a watchtower? एक watchtower क्या करता है? Can you tell me something? No? Okay, I don't think he knows. Let's ask Danish. Okay, Danish. What does a watchtower do? मिस वो ना जो भी बाहर के जो मुल्क वाले जो फौज होते हैं, वो कभी भी अगर पाकिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करने आते हैं, तो वो लोग वहां पे खड़े होकर सब पे निगरानी रख रहे होते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है. Exactly. So
what does the word watchtower means? इससे हमें नाम से क्या पता चल रहा है? Something which which watches over people. A watchtower is basically a tower. A tower is basically something very a building which is very height, okay, which is built on a height. सही है ना? तो वॉच टावर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या होते हैं, हर कंट्री के पास होते हैं. यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो भी आर्मी होती है, हमारी फौज होती है, ये क्या करती है, इट goes over there, it goes for a lookout. If someone is attacking our country, if someone is if there's a war starting, or if someone is trying to invade our country. What is what invade means? अगर कोई जबरदस्ती हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश करने वाला है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या होता है कि वॉच टावर के जरिए क्या होता है, वी कैन know it beforehand. सही है, हमें पहले से पता चल जाता है, and we can prepare. Okay, so this is what a watch tower means. We in our last class we talked about Alfred Fort. Okay, we are going to start from there. Okay, now I think you can all see the screen over here. Okay. This is what Alted Fort looks like. Okay, I'm going to show you some more pictures. I'm going to show you some more videos of Alted Fort. For now, we're going to start with Alted Fort. Okay, so I told you who built Alted Fort. Okay, Alted Fort was built by the ruling family of Hunza. Okay, basically, the ruling family of Hunza means the family which used to rule Hunza. Okay, you all know that there are some kind of families, there are some kind of people who there's some kind of king, there's some kind of president who runs a country, who runs it. Okay, so basically the people who are ruling Hunza, they were known as Mirs. What was they called? Mirs, M-I-R-S. Okay, they were known as Mirs. So what you're saying is that this Alted Fort stood tall in front of Karakoram since the 11th century. Okay, we all know that Karakoram is our mountain, and this Alted Fort has been present since the 11th century. Okay, now I told you about that it survived many attacks from aggressors. Aggressors are basically our enemies. Aggressors are people who are aggressive. Basically, aggressive are people who are who wants to attack us, who have some kind of problem with us. Okay, so what you're saying is that I already told you that at that fort withstood so many attacks, it withstood so many earthquakes, it withstood different kind of problems, different kind of wars in its time, and it is also present in our today's time still. Okay, so what does the word withstood means? I already told you in the last class, but you can know it again. That's something which resists breaking down. Okay, like it has so many problems, but it withstood. अभी भी क्या कर रहा है, सब चीजें सही हैं basically, और इसको अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है. It is remain undamaged. Okay, then we talked about that it is one of the astonishing architectural structures of its time. So what astonishing means? Amazing. What does the word astonishing means? Amazing. So what you're saying is that it is one of the amazing architectural structures of its time. What does the word architectural structure means? I already told you that architect means buildings. Okay, so it means that it is one of the best building style. It is one of the best building design that was built in the 11th century. Okay, no such thing of structure is seen, in used to seen by the 11th century. मगर क्या हुआ था कि ये वाहिद ऐसा स्ट्रक्चर है जो उस टाइम से क्या हुआ था, लोगों को बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा था. ओके, देन आई टोल्ड यू दैट दिस स्ट्रक्चर इज बिल्ड ऑन द हुंजा रिवर. ये हुंजा रिवर के पास साइड पे बनाया हुआ है. व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम आई टोल्ड यू देयर वर सम काइंड ऑफ पीपल दैट वर अटैकिंग द हुंजा वैली. ओके, बेसिकली क्या हुआ करता था, इट वाज this tower is built strategically to monitor the entire land during the war time. Okay, what does the word strategically means? Strategically means when people prepare it. Okay, जब क्या होता है हम इसको केयरफुली किसी चीज को प्रिपेयर करें. स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं ना. लाइक फॉर एग्जांपल, अब मुझे आप लोग अपना पेपर स्टार्ट करने वाले होते हैं, आप लोग अपने पेपर की प्लानिंग करते हैं, सही है ना. तो आप लोग अपनी प्लानिंग करने से पहले क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है इस क्वेश्चन का टीचर ने ज्यादा टेस्ट लिया तो ये आने के ज्यादा चांसेस है. या कुछ बच्चे होते हैं जो कि आपसे माशाल्लाह से सब बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सही है. अब कुछ बच्चे याद करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं. तो आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है कि आप लोग कोशिश करते हैं कि तैयारी करने के बजाय आप लोग स्पेलिंग्स पे फोकस करते हैं, सही है. तो बेसिकली स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है, व्हेन वी आर प्लानिंग केयरफुली, सही है. तो इसको भी
क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली जो है फोर्स मतलब प्लान किया गया था, ताकि आराम से हर जगह जो है वो ये हमें प्रोटेक्ट कर सके, गिलगित बल्तिस्तान के हर लैंड के ऊपर जो है वो ये वहाँ से खड़े होकर देख सके, ताकि अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या हो सके, दिस टावर कैन हेल्प अस. So yeah, at that time I told you that there were some constant threats. Okay, थ्रेट किसे कहते हैं, बेसिकली खतरे को. सही है. तो गिलगित बल्तिस्तान को किससे खतरा था, देयर वर टू काइंड्स ऑफ एनिमीज, दैट वर चाइनीज ट्रूप्स एंड कैबिन. ओके, कैबिन वर बेसिकली आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑन कैबिन. कैबिन कौन थे, दे वर नोन एज सी पायरेट्स. क्या थे कैबिन? सी पायरेट्स. पायरेट्स आपको पता है क्या होते हैं? सही है. हम सब ने पुराने जमाने में बहुत सारी मूवीज देखी, हमें पता है कि पायरेट्स का हुआ करते हैं. दे वर बेसिकली नोन एज द थीव्स ऑफ द सी. उनको क्या कहा जाता था, सी का थीव्स कहा जाता था. दे बेसिकली अटैक डिफरेंट लैंड्स, दे यूज्ड टू अटैक डिफरेंट सिटीज. ओके, एट दैट टाइम और पीपल को क्या था, इनसे उस टाइम बहुत ज्यादा खतरा था. तो कैबिन भी कौन थे, दे वर नोन एज सी पायरेट्स. सही है. इन लोगों ने क्या करा हुआ था, ये लोग क्या करते थे, लोग रिवर रूट्स पे मूव करते थे. व्हाई? बिकॉज यू ऑल नो दैट पायरेट्स क्या होते हैं, हमेशा वाटर में रहते हैं. उनकी अपनी बोट्स होती हैं, उनकी अपनी शिप्स होती हैं, और क्या करते हैं, वाटर रूट्स पे मूव करते हैं. सही है. तो उस टाइम पे जो पायरेट्स थे, जो कैबिन की आर्मी थी रशियंस की, ये क्या करते थे, बल्ती जो हमारा बल्तिस्तान है, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान, इस पे क्या करते थे, अटैक कर रहे होते थे. तो इनसे जो है वो बचाने के लिए क्या हुआ था, इनको वॉच टावर बनाना पड़ा था बेसिकली. ओके, up till now this was a little conclusion on our Alted Fort. Okay, if you have any problem, if you want to ask questions, you can ask me. If you understand it, just give me a thumbs up. Hurry up. You all know what is Alted Fort now. If you do, give me a thumbs up. Okay, okay, Asghar, I haven't seen your thumbs up. Amsal, beta, are you having problem? Okay, okay, Amsal, I can see your hand as well. Yes, Rafet. मिस वो मेरा नेट बंद हो गया था, मुझे वो वापस समझा दें. Okay, I will give you a conclusion at the end of the lecture. Okay, so up till now this was it for the Alted Fort. Okay, let's start. Okay, Amna, will you give me? Can you tell me when was Alted Fort built? Yes, Amna. मिस आपको मेरा होमवर्क मिल गया ना वॉच टावर का? Yes, I'm asking you when the Alted Fort was built. Yes, Amna. Yes, we are listening. Yes, I don't know. Okay, no problem, but you need to be very attentive. Okay, you need to, just listen very carefully to my lectures. You know that I'm going to give you your quiz. Your assignment will be from your lectures. Okay, so kindly listen very carefully. I try to deliver it as friendly as interesting as I can. Yes, Mabashir. Yes, आप होमवर्क क्या देंगे? When was at Fort built? जी मिस, When this watchtower was built? ये बस होमवर्क है. ये बस होमवर्क है. Okay, this fort was built in the 11th century. Okay, when was Alted Fort built? It was built in the 11th century. Okay, it was known as a watchtower. Okay, basically this Alted Fort was known as the Shikari Tower, which is the hunter's tower. Okay, this tower used to help people from the attacks from the Cabin Rush, which was a Russian army, and Chinese troops, okay, which was the army of Chinese. Okay, this fort had protect the Gilgit-Baltistan army. And why do they used to attack Gilgit-Baltistan? Automatically because the troops were sea pirates. They used to travel in sea routes. Okay, they used to attack through sea, and that is why, because our Gilgit-Baltistan is located in a very near our sea.
ओके हुंजा वैली के पास लोकेटेड था, इस वजह से क्या होता था कि यहाँ पे अटैक करने के यहाँ पे ज्यादा खतरे होने के चांसेस थे, सही है। दिस वाज आवर एल्टेड फोर्ट, ओके। Then we talked about the Kharkocho fort. Okay, I'm going to show you some pictures of what the Alfred fort looks like. Okay, you can see. Okay, this is basically how the Alfred fort looks like. Okay, you can see that it was, I'm saying, okay, it was built near water. सही है. So can you see that at the corner that is the Alfred fort, and then you can see the Hunza water. Can you all see it? Okay, so this is how they planned the altered fort, that whenever someone was coming from the Hunza Valley, wherever someone was coming in Gilgit-Baltistan, this fort can automatically see it beforehand. If someone was coming from the mountains, if someone was coming from the water, this fort withstood it. It was, it was before the water. ये पहले सबसे पहले कॉर्नर में एल्टेड फोर्ट के बना हुआ था, और इसकी वजह से क्या होता था, अगर कोई भी अटैक होने वाला था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो क्या होता था, इसको पहले से पता चल जाता था. सही है. Now we are going to move forward and we are going to start uh, with Kharkocho fort. Okay, now Gilgit-Baltistan is an undisputed paradise for tourists. What the word disputed means? It means accepted. The word undisputed means accepted. So what I'm saying is that Gilgit-Baltistan is an accepted paradise for tourists. What does it mean? It means that people from all over the world has accepted Gilgit-Baltistan as a paradise. Why? Because I already told you that it is an embodiment of nature's perfection. What does it mean? It is a city which is, purely nature's perfection. Okay, if you go visit Gilgit-Baltistan, you will see full greenery. You will see the land so much green over there. You will see the air is very fresh over there. Okay, why? There are not many transport. There are no such thing as cars. There is no such thing as, pollution. There is no such thing as air pollution, and the air is very clean over there. So basically, it is one of the cities. It is one of the country which is known as the nature's perfection. Okay, you will find some great mountains over there. People can, climb the mountains. People can see the Hunza water. The Hunza river is basically a pure river. Okay, जो कि क्या है, fresh water lake है basically. Okay, you can go, you can drink the water from Hunza, and basically it is a very beautiful place. That is why Gilgit-Baltistan is known as a paradise for tourists. I already told you tourists कौन होते हैं. ये वो people होते हैं जो कि from all over the world ये लोग क्या करते हैं, travel करते हैं. सही है. तो क्या आपको पता होगी बात कि पूरी वर्ल्ड में से बहुत सारी जगहों से क्या होता है कि लोग पाकिस्तान में घूमने आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगी कि अभी रिसेंटली जो है वो इंग्लैंड की जो प्रिंसेस है वो क्या हुई थी, पाकिस्तान घूमने आई हुई थी. वाई? और जब वो घूमने आई थी तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इस तरह की जितनी भी फेमस प्लेसेस है वो सारी क्या करी थी, विजिट करी थी पाकिस्तान के. सही है. नाउ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन Gilgit-Baltistan is Skardu Fort. It is situation in Skardu. I already told you that Kharkocho Fort has a second name that is called as Skardu Fort. Kharkocho Fort को Skardu Fort भी कहा जाता है. सही है. और क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है. डेस्टिनेशन किसे कहते हैं, बेसिकली प्लेस को. सही है. तो क्या कह रहे हैं कि अगर कभी भी कोई स्कर्दू जाता है ना, तो वो इस फोर्ट को जरूर विजिट करते हैं. सही है. क्यों कह रहे हैं कि ये फोर्ट का एक्सेलेंट एग्जाम्पल है ये एंशिएंट इंजीनियरिंग टेक्निक्स की. क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ये फोर्ट जिस तरह से बनाया गया है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है. आज तक कभी भी किसी ने ऐसा फोर्ट नहीं बनाया होगा. क्यों? Skardu Fort is named as Kharkocho Fort. It is defined as a crown jewel of the city. सही है. Kharkocho Fort का मतलब क्या होता है, ये crown jewel of the city. इसका क्या मतलब है कि ये जो स्कर्दू है इसकी बेसिकली क्राउन है. सही है. आप लोगों को पता होगा कि एक क्राउन कौन पहनते हैं, क्राउन हमेशा जो है वो हमारे प्रिंस, हमारे किंग्स, इस तरह के लोग पहनते हैं. सही है ना. तो बेसिकली हमारे किंग्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. उसी तरह जो हमारा Kharkocho फोर्ट है ये भी क्या है, स्कर्दू का क्राउन है. सही है. इसका मतलब है कि जो स्कर्दू की जितनी भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो किसको दी हुई गई है, Kharkocho फोर्ट को. सही है. इसको जो है वो इट इज नोन इन बल्कि एज मेस्मराइजिंग साइट फॉर अ टूरिस्ट. मेस्मराइजिंग का क्या मतलब होता है, ब्यूटीफुल. व्हाट डज द वर्ड मेस्मराइजिंग मींस, ब्यूटीफुल. तो कह रहे हैं कि ये जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल साइट है लोगों के लिए. सही है. ये जो है वो वहाँ के जो मुनार्च है Gilgit-Baltistan के, उन्होंने जो है वो इसको बिल्ड किया. मुनार्च किसे कहते हैं, बेसिकली मुनार्च जो है वो
जो भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, सही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग जो है वो स्कर्दू को मैनेज करते होंगे, जैसे गिलगित बल्तिस्तान को मिर्स करते थे, सही, रूलिंग फैमिली ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का क्या नाम था, मिर्स। उसी तरह जो यहाँ स्कर्दू फोर्ट की जो भी मेन स्टेट होंगे उन लोगों ने स्कर्दू फोर्ट बनाया हुआ था, सही है। An instinctive board of stone and rock along with the Rajab eggs make it look like it been forced out of the mountain itself. सही है। Instinctive का क्या मतलब होता है, natural, सही है। Board का क्या मतलब होता है, pile, यानी ये क्या एक natural pile of stones की तरह, सही है। Natural मतलब आप बता चुके हो गिलगित बल्तिस्तान क्या है, बेसिकली पूरा natural है, सही है। तो क्या कह रहे हैं, ये एक natural इस तरह से बना हुआ है कि क्या होता है कि बहुत सारे stones और rocks ने इस तरह से इसको बनाया हुआ है कि ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये माउंटेन से खुद निकल के बाहर आ रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि माउंटेन है या ये फोर्ट है, ये इतना ज्यादा माउंटेन्स के अंदर बना है, सही है। कैसे, आई विल शो यू अ पिक्चर। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ खारफूचो फोर्ट। ओके, कैन यू सी दैट दिस इज अ होल माउंटेन, सही है। और ये माउंटेन के बीच में देखिए किस तरह से प्लान करके बनाया हुआ है, सही है। व्हेन दे वर मेकिंग इट, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि एक पहाड़ के अंदर कोई भी चीज बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड यू कैन सी, अगर कोई पहाड़ बहुत दूर से देखता है ना, तो उसको ये फोर्ट दिखता भी नहीं है, सही है। और जब आप करीब जाके देखते हो तो ऐसा क्या लगता है कि ये फोर्ट क्या हो रहा है, ये जो है वो माउंटेन्स में से फोर्ट जो के बाहर आ रहा है, मतलब माउंटेन्स में से ही निकल रहा है। ओके, ज्यादातर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं दूर से, कि उनको लगता है ये माउंटेन का ही पार्ट है। जब भी कोई स्कर्दू जाता है वो इस साइट को देखने जरूर जाता है, एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर साइट फॉर टूरिस्ट। ओके, so this was it for our lecture. Okay, I'm going to ask a few questions and automatically we're going to continue this in our next class. Okay, yes Abhiya, can you tell me that what does the word mesmerizing means? They're saying it was a mesmerizing site for tourists. What does the word mesmerizing means? Okay, I think she's having problems hearing me. Let's start with Ali Salman. Yes, Ali Salman. What does the word mesmerizing means? What? What does the word mesmerizing means? आप लोगों को देख के मुझे समझ में आ जाता है कि किसने क्लास ली किसने क्लास नहीं ली, सही है। क्योंकि माशाल्लाह से आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कि आप लोग मुझे दूर से ही दिख जाते कि कौन क्लास में आया कौन नहीं आया, सही है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा, सही है। मैं क्विज कल इसलिए नहीं ले रही हूँ ताकि अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम कल ही है, ले लें, दानिश दानिश कल ही ले लें, दानिश तुम फिर से शुरू हो गए ना यहाँ पे भी, सही है। ताकि कल ही ले लें। ओके दानिश, डोंट वरी, जरूरी नहीं है हम लोग ज्योग्राफी का कुछ ज्योग्राफी की क्लास में ही लें, मैं आपको हिस्ट्री की क्लास में भी ले सकती हूँ, सही है। तो पहले ज्यादा जरूरी क्या है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर ले, ट्रू एंड फॉल्स कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम होगी वर्कशीट की तो वो सामने आ जाएगी, ताकि अगर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तब हम जो है वो क्विज रख लेंगे, कोई मसला नहीं, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि अब आप लोगों को मैं क्विज नहीं रख रही हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली आप लोगों को होमवर्क असाइन करूंगी, सही है। तो मैं अभी से आप लोग को आपको होमवर्क बता रही हूँ, तो आप लोग फाइनली जो है अपनी वर्कशीट्स में चेक कर लीजिए और मार्क कर लीजिए। वैसे मैं ये जो है वो अपलोड कर दूंगी, सही है। क्या है टीचर? और आप लोग प्लीज कोशिश किया कीजिए कि होमवर्क टाइम पे सबमिट कराया कीजिए। मुझे सिरान का और जयान का और सनान का, मोइस का, मुझे इन लोगों का होमवर्क डेली मिले और इतने प्यारे प्यारे होमवर्क होते हैं, सही है।